Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about units. That is, what are units? This is our today's lecture. So, this is topic number 1 or the chapter number 1, physical quantities and units. This is the chapter name, that is physical quantities and units. And our today's lecture is about the units. What are units? This is our today's lecture. So three things we are going to discuss in this lecture. That is, what are units, what are different types of units, and how we get the derived units. These three things we are going to discuss in this lecture. Now the units. What is a unit? First of all, we are going to define what is a unit. The minimum amount which is used for the measurement of a physical quantity is called as the unit. The minimum amount which is used for the measurement of a physical quantity is called as a unit. For example, 1 meter is the minimum amount which is used to measure length. So 1 meter is the unit of length. For example, when we use the meter rule, so meter rule is 1 meter long, and 1 meter long meter rule is used to measure the length. So 1 meter, which is the length of meter rule, this 1 meter is the unit of length. So 1 meter is the unit of length. So this 1 meter is the minimum amount which is used to measure length. So 1 meter is the unit of length. Also, 1 kilogram is the minimum amount which is used to measure mass. So 1 kilogram is the unit of mass. So when we measure the mass, we use a 1 meter baht in the balance, and 1 kilogram baht, it is the minimum amount which is used to measure mass. So 1 kilogram, which is the minimum amount which is used for the measurement of mass, this 1 kilogram is the unit of mass. So 1 kilogram is the unit of mass, and this 1 kilogram is the minimum amount which is used to measure mass. So 1 kilogram is the unit of mass. So 1 meter is the unit of length, and 1 kilogram is the unit of mass. So now every physical quantity has its own unit. Every physical quantity has its own unit. So we are going to discuss the units of different quantities. That is, which quantity has which unit. So units, they belong to different physical quantities. So every physical quantity has its own unit, like length, mass, time, temperature, electric current. All these quantities, they have their own units. Now the examples of units. There are different units for different physical quantities. For example, meter is the unit, kilogram is the unit, second is the unit, ampere is the unit, Kelvin is a unit, candela, this is a unit. All these are units. Mole, meter square, meter cube, meter per second square, Newton, joule, watt, Pascal, kilogram per meter cube, volt, coulomb, ohm. All these are units. And these are different examples of units. And these units belong to different physical quantities. So there are so many other units also. These are some few units, but there are many other units also. So these are the examples of the units.
So these are the quantities, and these are units. On one side we have quantities, on the other side we have units. You can see here, these are the quantities and these are the units. So every quantity has a unit. These units belong to different quantities, and every quantity has some unit. For example, unit of length is meter, unit of mass is kilogram, unit of time is second, unit of current is ampere, unit of temperature is Kelvin. In the same way here, unit of speed and velocity is meter per second, unit of acceleration is meter per second square, unit of force and weight is Newton, unit of work and energy is joule, unit of watt is power. So all these quantities, they have their units. So on one side we have quantities, these are the quantities. On the other side we have units. Now the types of unit. Units are of two types. There are two types of unit. That is basic units and derived units. These are two types of units. First, what are the basic units? The units of basic quantities are called basic units. The units of basic quantities are called basic units. For example, these are the basic units, that is meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, candela, mole. And these all are the basic units of the SI system. So units are of two types, that is basic units and derived units. These are the basic units. This is the first type of units. These all are basic units. Number two, second type of units are the derived units. What are the derived units? The units of derived quantities are called derived units. The units of derived quantities are called derived units. For example, all these are the derived units. That is meter square is the derived unit, meter cube is the derived unit, meter per second is the derived unit, meter per second square is the derived unit. All these are the derived units. Newton, joule, Pascal, watt, ohm, volt, coulomb. These are all the derived units. So units are of two types, that is basic units and derived units, and these all are the derived units. Next, basic units of different systems. Every system has its own basic units. So there are four system of unit, that is SI system, MKS system, CGS system, and FPS system. And these four systems have their basic units and derived units. So here we are going to discuss the basic units. So these are the four systems: SI system, MKS system, CGS system, FPS system. These are the basic units of SI system. These are the basic units of MKS system. These are the basic units of CGS system. These are the basic units of FPS system. So these all are the basic units. Here, unit of mass, kilogram is the basic unit. Also, kilogram is the basic unit. Also, here the unit of mass, gram is the basic unit. But here, pound, which is the unit of weight. So unit of weight is the basic unit, not the unit of mass. So here in FPS system, unit of weight is the basic unit, which is pound. So this is the chart of basic units of all the four systems. Now the derived unit of different systems. So here are given the derived units of the four systems. These are the four systems: SI system, MKS system, CGS system, FPS system. And these are the derived units of the SI system. You can see here, these are the derived units of SI system. And these are the derived units of MKS system. And these are the derived units of CGS system. And these are the derived units of FPS system. So this is the chart of the derived unit. That is meter square, it is the derived unit, meter cube derived unit, meter per second square, Newton, joule, watt, Pascal, kilogram per meter cube, volt, ohm, coulomb. These all are the derived units of the SI system. Here meter square, meter cube, meter per second,
meter per second square, Newton, joule, watt, Pascal, kilogram per meter cube. These are the derived units of MCAS system. Here centimeters square, centimeter cube, centimeter per second square, dyne, erg, gram per centimeter cube. These are the derived units of CGS system. Here foot square, foot cube, foot per second square, slug, slug per foot cube. These are the derived units of FPS system. Here we have slug. Slug is the unit of mass, and it is a derived unit because mass is the derived quantity in FPS system. So unit of mass is also derived unit. Since mass is the derived quantity, so its unit slug is also a derived unit. So this is the chart of the derived units of the four systems. So how we get derived units? How we get derived units? We are going to discuss this. We get derived unit from basic units by using mathematical equations. So we get derived units from the basic units by using mathematical equations, and we can make derived units of different physical quantities by their equations. So every derived quantity has an equation. By using that equation we can make the derived unit. So derived units we get from the basic units by using mathematical equation. We take different examples how we make derived units. How we make derived units, we are going to take different examples. For example, area is a derived quantity. Its unit is meter square, and meter square is a derived unit. How we get this derived unit, we are going to discuss here. So area is equal to length and to width. This is the equation of area. Now length is a distance and width is a distance. So length unit is meter and width unit is meter. We put here meter into meter, and meter into meter is meter square. So meter square is the derived unit of area, and meter square can be written as m square. So we get this derived unit by this equation. So this is the derived unit of area. We get this derived unit meter square by this equation. This is the way of getting derived units. This is the first example of area. So by using this equation, we get the derived unit. Now second example is volume. Unit of volume is meter cube, and meter cube is a derived unit. How we get this meter cube? So volume is equal to length and to width and to height. So unit of length is meter, unit of width is meter, unit of height is meter. So meter into meter into meter is meter cube. So meter cube is the derived unit. So we get this derived unit by this equation here. So meter cube is the derived unit we get from this equation, and meter cube is written as m cube. So meter cube is the derived unit of volume. So we get by this equation. Next example is speed or velocity. So unit of speed and velocity is meter per second. This is a derived unit. How we get it? Speed is equal to distance divided by time. This is the equation of speed. Now the unit of distance is meter and the unit of time is second. So meter per second is written as meter per second. This is the derived unit of speed, and this meter per second is written as m divided by s. This is the derived unit of speed or velocity. So this derived unit we get from this equation here. You can see here. So derived units we get by using different equations. Also, example number 4 is the acceleration. How we get the derived unit of acceleration? So derived unit of acceleration is meter per second square. As the equation of acceleration is delta v by t.
Delta V is the change of velocity. So change of velocity, it has the unit meter per second. So we put delta V unit, that is meter per second, here. So unit of change of velocity is meter per second and unit of time is second. So we solve it and we get meter per second square. So meter per second square is the derived unit of acceleration, and this meter per second square is written as m divided by second square. So this is the derived unit of acceleration. We get this derived unit by this equation. Also another quantity, that is force, its unit is Newton, and Newton is equal to kilogram meter per second square. As the equation of force is F is equal to ma. Now unit of mass is kilogram and unit of acceleration is meter per second square. Put this unit here, we get meter per second square. Unit of mass is kilogram and unit of acceleration is meter per second square. And so kilogram meter per second square is the unit of force. And we can write second square, if we shift it to the numerator, we get kilogram meter second power minus 2. So this is the derived unit of force, and this derived unit is given the name Newton. So Newton is a derived unit, and we get this derived unit by this equation. So this is the derived unit of force. Next example number 6 is density. Unit of density is kilogram per meter cube or kilogram meter power minus 3. As the equation of density is equal to mass divided by volume. This is the equation of density. So unit of mass is kilogram and unit of volume is meter cube. So put these units here in this equation. Unit of mass is kilogram and unit of volume is meter cube. So if we shift this meter cube to the numerator, we get kilogram meter power minus 3. So this is the derived unit of density. So this is the derived unit of density, and we get this derived unit by this equation. We get this derived unit from this equation. So by using the equation, we get the derived units. So density rho, this is the symbol of density, that is rho. Rho has the derived unit this. Next example is the work. Unit of work is Newton into meter, and this is given the name joule. So derived unit is Newton meter or joule. As the equation of work is force multiplied by distance. So unit of force is Newton and unit of distance is meter. So Newton into meter, this is a derived unit of work. Or we can write Newton into meter as joule. So joule is the derived unit of work. And we get this derived unit from this equation. This is the equation. From this equation, we get this derived unit. So using the equations, we get the derived units. So every derived quantity has its equation. From that equation, we get the derived unit. सो ये चैप्टर नंबर 1 है या टॉपिक नंबर 1 है. इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट. फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट, दिस इज़ ये नेम है चैप्टर का. तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट. यूनिट क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. तो 3 चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. यूनिट क्या चीज़ है, यूनिट की टाइप कौन कौन सी हैं, और हम derived यूनिट किस तरह हासिल करते हैं, किस तरह हम derived यूनिट बनाते हैं. ये 3 चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. सबसे पहले यूनिट को डिफ़ाइन करेंगे. यूनिट क्या है, वो कम से कम मिकदार, वो कम से कम अमाउंट जो हम किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस कम से कम अमाउंट को यूनिट कहते हैं. वो कम से कम अमाउंट जिसको हम किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी के मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस कम से कम अमाउंट को यूनिट कहते हैं. मसलन एक मीटर रूल हमारे पास होता है, उसकी लेंथ होती है 1 मीटर.
तो 1 मीटर वो कम से कम अमाउंट है जिसको हम लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो कम से कम अमाउंट जो 1 मीटर है उसको कहते हैं कि ये लेंथ की यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है। सो 1 मीटर रॉड जो होता है 1 मीटर रूल, तो मीटर रूल की लेंथ 1 मीटर होती है, तो ये कम से कम लंबाई जो 1 मीटर है ये यूनिट ऑफ लेंथ है। ये वो कम से कम अमाउंट है जिसको हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। या 1 किलोग्राम का जो बाट होता है तो उसकी अमाउंट होती है 1 किलोग्राम। तो ये 1 किलोग्राम वो कम से कम अमाउंट है जिसको हम मैस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। लिहाजा ये कम से कम अमाउंट जो 1 किलोग्राम है ये मैस की यूनिट है। सो वो कम से कम अमाउंट जो किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होती है वो उस फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। तो यूनिट लेंथ की है, लेंथ की यूनिट 1 मीटर है। इस तरह मास की यूनिट 1 किलोग्राम है। इस तरह हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी यूनिट है। एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ इट्स ओन यूनिट। लेंथ की यूनिट है, मास की, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, सब की अपनी अपनी यूनिट है। तो सबसे पहली चीज़ यूनिट को हमने डिफाइन किया कि वो कम से कम अमाउंट जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होती है उसको यूनिट कहते हैं। अब यूनिट की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। देर आर डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। हर क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है। मसलन ये मुख्तलिफ यूनिट की मिसालें हैं। कौन कौन सी यूनिट है? मसलन मीटर एक यूनिट है, किलोग्राम यूनिट है, सेकंड यूनिट है, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, ये सारी की सारी यूनिट है। मोल, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, जाउल, वाट, पास्कल, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वोल्ट, कूलम, ओम, ये सारी की सारी यूनिट है। मसलन मीटर जो है ये लेंथ की यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट है, एम्पेयर करंट की यूनिट है। तो सारी की सारी यूनिट हैं, ये यूनिट की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। सो देर आर सो मैनी अदर यूनिट्स, यानी तो कुछ मिसालें हैं, इसके अलावा भी बहुत सी यूनिट्स हैं। तो ये यूनिट्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमने आपको दी हैं। सो ये सारी की सारी यूनिट किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। हर क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है और हर यूनिट किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी से ताल्लुक़ रखती है। तो ये मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। एक तरफ ये क्वांटिटीज़ हैं, ये देख लें, और दूसरी तरफ ये यूनिट्स हैं, ये सारी यूनिट्स हैं। तो एक तरफ क्वांटिटीज़ हैं, ये क्वांटिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ ये यूनिट्स हैं। हर क्वांटिटी की अपनी यूनिट है। मसलन लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, करंट की एम्पेयर है, टेम्परेचर की केल्विन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, स्पीड वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स और वेट की न्यूटन है, वर्क एनर्जी की जूल है। इस तरह पावर, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब की यूनिट्स हैं। तो हर यूनिट जो है किसी के न किसी क्वांटिटी से ताल्लुक़ रखती है और हर क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है। तो एक तरफ क्वांटिटीज़ दी हुई है, दूसरी तरफ यूनिट दी हुई है, ये देख लें। अब यूनिट दो तरह की हैं, एक है बेसिक यूनिट्स, एक है ड्राइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले बेसिक यूनिट को तो कौन सी होती हैं? जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स को बेसिक यूनिट कहते हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ की यूनिट को बेसिक यूनिट कहते हैं। अब बेसिक यूनिट कौन सी हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सब की सब बेसिक यूनिट्स हैं। ये एसआई सिस्टम की बेसिक यूनिट्स हैं। तो पहली किस्म जो है यूनिट की बेसिक यूनिट्स हैं, उसकी एग्जांपल ये हैं, ये सारी बेसिक यूनिट्स हैं, ये उसकी एग्जांपल है। दूसरी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ड्राइव्ड यूनिट कौन सी होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती हैं उनको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं उनको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। सो यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट की मुख्तलिफ मिसालें हैं। ये सारी सारी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, न्यूटन, जूल, पास्कल, वाट, ओम, वोल्ट, कूलम, ये सारी ड्राइड यूनिट्स हैं। ऑल दीज आर द ड्राइड यूनिट्स। तो ये तो कुछ थोड़ी सी ड्राइड यूनिट्स हैं। ड्राइड यूनिट्स तो बहुत सी हैं, बहुत सी ड्राइड यूनिट्स और भी हैं। ये तो कुछ मिसालें हैं। यहाँ हम मुख्तलिफ सिस्टम्स की बेसिक यूनिट को डिस्कस करते हैं। हर सिस्टम की अपनी बेसिक यूनिट्स हैं, तो मुख्तलिफ सिस्टम की मुख्तलिफ बेसिक यूनिट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो 4 सिस्टम, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, ये 4 सिस्टम है। इनकी बेसिक यूनिट्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, ये 4 सिस्टम, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, इनकी बेसिक यूनिट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी की सारी बेसिक यूनिट है SI सिस्टम की, ये सारी की सारी MKS सिस्टम की बेसिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है CGS सिस्टम की, ये बेसिक यूनिट है FPS सिस्टम की। तो ये सारा का सारा बेसिक यूनिट्स का चार्ट है। अब यहाँ पे देखें, मास की यूनिट किलोग्राम बेसिक यूनिट है, यहाँ भी मास की यूनिट किलोग्राम बेसिक यूनिट है, यहाँ मास की यूनिट ग्राम बेसिक यूनिट है। लेकिन यहाँ मास की यूनिट बेसिक यूनिट नहीं है, यहाँ वेट की यूनिट पाउंड है, ये बेसिक यूनिट है। तो लेंथ की यूनिट फुट है, वेट की पाउंड है और टाइम की सेकंड, ये 3 बेसिक यूनिट है FPS सिस्टम में। तो ये सारा का सारा बेसिक यूनिट्स का चार्ट है। ये चारों सिस्टम की बेसिक यूनिट यहाँ दी हुई है। ये 7 बेसिक यूनिट है, इधर 3 बेसिक यूनिट है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 बेसिक यूनिट है। ये मुख्तलिफ सिस्टम की ड्राइव्ड यूनिट दी हुई है। हर सिस्टम की जिस तरह बेसिक यूनिट है, हर सिस्टम की उसी तरह ड्राइव्ड यूनिट्स भी हैं। तो ये चारों सिस्टम यहाँ दिए हुए हैं, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम है। तो उन चारों सिस्टम की ड्राइव्ड यूनिट यहाँ दी हुई है। ये ड्राइव्ड यूनिट है SI सिस्टम की, ये देख लें। ये ड्राइव्ड यूनिट है MKS सिस्टम की, ये ड्राइव्ड यूनिट है CGS सिस्टम की, ये ड्राइव्ड यूनिट है FPS सिस्टम की। तो सारा का सारा ड्राइव्ड यूनिट का चार्ट है। मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वोल्ट, ओम, कूलम, ये सारी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। किसकी? SI सिस्टम की। इस तरह ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सारी MKS सिस्टम की ड्राइव्ड यूनिट है। ये CGS सिस्टम की सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सारी की सारी। इस तरह फुट स्क्वायर, फुट क्यूब, फुट पर सेकंड स्क्वायर, सारी ड्राइव्ड यूनिट है FPS सिस्टम की। अब यहाँ पे स्लग जो है, ये मास की यूनिट है। क्योंकि मास एक ड्राइड क्वांटिटी है FPS सिस्टम में, तो उसकी यूनिट स्लग जो है, ये एक ड्राइड यूनिट है। सो ये स्लग जो है मास की यूनिट है, ये ड्राइड यूनिट है FPS सिस्टम की। तो ये सारी की सारी ड्राइड यूनिट्स का चार्ट दिया हुआ है। चारों सिस्टम की ड्राइड यूनिट दी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सी ड्राइड यूनिट है। ये तो कुछ मिसालें दी हुई हैं यहाँ पे। आगे, हाउ वी गेट द ड्राइड यूनिट। ड्राइड यूनिट हम किस तरह हासिल करते हैं? हर ड्राइड क्वांटिटी की अपनी एक ड्राइड यूनिट होती है। वो ड्राइड यूनिट किस तरह हासिल करते हैं? मुख्तलिफ मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए। हर ड्राइड क्वांटिटी की अपनी इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन से हम ड्राइड यूनिट हासिल करते हैं। बस सबसे पहले इसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं इन ड्राइड यूनिट की, कि किस तरह हम बनाते हैं उनको, किस तरह हासिल करते हैं, उसकी मुख्तलिफ मिसालें। बस पहली क्वांटिटी एरिया है। ये एरिया एक ड्राइड क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, ये एक ड्राइड यूनिट है। तो मीटर स्क्वायर ड्राइड यूनिट है, किस तरह हम हासिल करते हैं? अब एरिया की देखें इक्वेशन, ये है लेंथ एंड टू वेड्थ। अब लेंथ भी एक डिस्टेंस है, वेड्थ भी डिस्टेंस है। तो लेंथ की यूनिट मीटर है, वेड्थ की यूनिट मीटर है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर एक ड्राइड यूनिट है, ये हमने इस इक्वेशन से हासिल की है। तो ये मीटर स्क्वायर, ये ड्राइड यूनिट है। किधर से हासिल की? हमने इस इक्वेशन से हासिल की है। तो ये ड्राइड यूनिट बन गई है। तो मीटर स्क्वायर को M स्क्वायर लिखते हैं। सो एरिया एक ड्राइड क्वांटिटी है, उसकी यूनिट एक ड्राइड यूनिट है मीटर स्क्वायर। हमने किससे हासिल की? इस इक्वेशन से हासिल की है। इस तरह वॉल्यूम एक ड्राइड क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है मीटर क्यूब, ये एक ड्राइड यूनिट है। किससे हम हासिल करते हैं इस ड्राइड यूनिट को?
ये ड्राइव्ड यूनिट है। किस तरह हासिल करते हैं? ये वॉल्यूम की इक्वेशन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ एंड टू विड्थ एंड टू हाइट। अब लेंथ भी डिस्टेंस है, विड्थ भी हाइट भी, तो लेंथ की यूनिट मीटर है, विड्थ की मीटर है, हाइट की मीटर है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बन गया। तो मीटर क्यूब क्या है? ये ड्राइव्ड यूनिट है, किसकी? वॉल्यूम की। तो ये ड्राइव्ड यूनिट किस तरह से हासिल की? इस इक्वेशन से हासिल की हमने। सो ये दिस ड्राइव्ड यूनिट एंड दिस मीटर क्यूब इज रिटन एज एम क्यूब। तो ये सारी ड्राइव्ड यूनिट है, हमने इस इक्वेशन से हासिल की है। तो हर क्वांटिटी की अपनी, हर ड्राइव्ड क्वांटिटी की अपनी इक्वेशन है, उस इक्वेशन से उसकी ड्राइव्ड यूनिट हम हासिल करते हैं। इस तरह ये स्पीड वेलोसिटी, उसकी ड्राइव्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये ड्राइव्ड यूनिट है। किस तरह हासिल करते हैं? मसलन स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो मीटर, डिस्टेंस यूनिट है मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर डिवाइड बाई सेकंड, ये ड्राइव्ड यूनिट है। तो इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड एक ड्राइव्ड यूनिट है। किस तरह हासिल की? इस इक्वेशन से हासिल की। तो ये ड्राइव्ड यूनिट है, हमने इस इक्वेशन से हासिल की, देख लें इसको। और मीटर पर सेकंड को लिखते हैं एम डिवाइड बाई एस, ये ड्राइव्ड यूनिट है। किस तरह हासिल की? इस इक्वेशन से हासिल की। तो हर क्वांटिटी की अपनी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन से हम ड्राइव्ड यूनिट हासिल करते हैं। अब अगली मिसाल है एक्सेलरेशन। चौथी मिसाल एक्सेलरेशन की है। ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसकी ड्राइव्ड यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक ड्राइव्ड यूनिट है। किस तरह हासिल करते हैं? एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। ये यूनिट हम यहाँ डालेंगे इसकी जगह, तो यह आएगा मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है ये। तो इसको सॉल्व करें तो बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक ड्राइव्ड यूनिट है। किधर से हासिल की? इस इक्वेशन से हमने हासिल की, ये इक्वेशन। सो ये ड्राइव्ड यूनिट है। किस तरह हासिल की? इस इक्वेशन को यूज करके ड्राइव्ड यूनिट हमने हासिल की, ये देख लें। अब इस तरह फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है ड्राइव्ड यूनिट। क्या है? ड्राइव्ड यूनिट है न्यूटन, या इसको लिखते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, ये ड्राइव्ड यूनिट है। किस तरह हासिल करते हैं? ये फोर्स की इक्वेशन ये है, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इक्वेशन यहाँ, ये यूनिट हम यहाँ डालें इस जगह, तो ये हमें मिल जाएगा ये। तो किलोग्राम और इस एक्सेलरेशन की ये यूनिट है, हमने यहाँ से उठा के यहाँ डाली है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ड्राइव्ड यूनिट बन गई है। ये देखें, ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये यहाँ बन गई है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो सेकंड पावर -2 हो जाएगा। तो ये ड्राइव्ड यूनिट है। ये देखें, ये ड्राइव्ड यूनिट हमने हासिल कर ली है। किससे हासिल की? इस इक्वेशन से हासिल की है। और इसका नाम क्या होता है? न्यूटन। तो ये ड्राइव्ड यूनिट हमने हासिल की, किसकी यूनिट? फोर्स की। फोर्स की यूनिट ड्राइव्ड यूनिट है। हासिल किस तरह की? इस इक्वेशन से हासिल की है। इस तरह एक और मिसाल है डेंसिटी। डेंसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसकी यूनिट, ये ड्राइव्ड यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर पावर -3, ये ड्राइव्ड यूनिट है। तो किस तरह हासिल की? डेंसिटी की इक्वेशन ये, डेंसिटी रो डेंसिटी को शो कर रहा है, रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी की इक्वेशन ये है। अब मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो ये यूनिट्स हम यहाँ लिख देते हैं, मास की जगह किलोग्राम लिखा है, वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब लिखा है। तो किलोग्राम डिवाइड बाई मीटर क्यूब, ये यूनिट है किसकी? डेंसिटी की। या इसको हम लिख सकते हैं मीटर पावर 3 को ऊपर ले आएँ तो मीटर पावर -3 बन जाएगा। तो ये ड्राइव्ड यूनिट है किसकी? ये डेंसिटी की। किस तरह हासिल की? इस इक्वेशन से हासिल की हमने। तो इस इक्वेशन से हमने ड्राइव्ड यूनिट हासिल की, ये ड्राइव्ड यूनिट है, सारी हमने यहाँ हासिल कर ली है। इस तरह वर्क एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसकी ड्राइव्ड यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, या इसका नाम है जाउल। किस तरह हासिल करते हैं? वर्क की इक्वेशन ये है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये वर्क की इक्वेशन है। अब फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर है। तो ये ड्राइव्ड यूनिट है वर्क की, हमने इस इक्वेशन से हासिल की। और न्यूटन इंटू मीटर को जाउल कहते हैं, तो जाउल एक ड्राइव्ड यूनिट है। किस तरह हासिल की? इस इक्वेशन से हासिल की। तो हर क्वांटिटी, हर ड्राइव्ड क्वांटिटी की अपनी इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन से उसकी ड्राइव्ड यूनिट हम हासिल करते हैं। सो हर एक
ड्राइड क्वांटिटी की जो ड्राइड यूनिट है उसकी इक्वेशन हम हासिल करते हैं। तो ये कुछ मिसालें हमने आपको दी हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ड्राइड यूनिट हम कैसे हासिल करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा था कि यूनिट क्या है और यूनिट की टाइप क्या है और ड्राइड यूनिट हम कैसे हासिल करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था ये। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सो सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get every new video. Thank you.